Welcome to economics class. Today we will discuss about theory of supply. This is very important topic and is somewhat opposite to theory of demand. So we will be able to complete this chapter quite quickly as compared to theory of demand. Clear? Now, what is supply? Supply refers to the quantity of a commodity which is offered for sale at a given price during some particular time, means at a particular period of time. The amount of a commodity which is offered for sale corresponding to a particular price level is known as supply. सिर्फ उसको बेचने की कोशिश की जा रही है, सारा का सारा सामान सेल होगा या नहीं होगा ये एक अलग मैटर है. सो व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which is offered for sale corresponding to a given price level of the commodity. Now, there is difference between supply and quantity supplied. Supply is a wider concept. It shows a table, it shows a schedule, or it shows various quantities offered for sale at different possible prices of the commodity. On the other hand, quantity supplied refers to a specific quantity of a commodity that the producers are ready to sell at a specific price of the commodity. जैसे अगर हम एक पूरी की पूरी टेबल शो कर रहे हैं, बच्चे यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. There is a positive relationship between price of a commodity and its supply. Higher the price level ensures more profit for the producer. That's why he will ready to offer more for sale at higher price level. So अगर हम ये कहें कि एक कमोडिटी का प्राइस लेवल 1 रुपी से बढ़कर 2 रुपीज़ हो गया है, या 2 रुपीज़ से बढ़कर 3 हो गया है, या 3 रुपीज़ से बढ़कर 4 हो गया है, और इसकी क्वांटिटी सप्लाइड 5 यूनिट्स से 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स, और 15 यूनिट्स टू 20 यूनिट्स हो गई है, then this entire schedule will be called as supply of the commodity. On the other hand, quantity supplied shows द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. जैसे अभी मैंने आपको एक टेबल सुनाई थी, तो उसी टेबल में से मैं अगर ये ले लूँ कि व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹2, द क्वांटिटी सप्लाइड इज 10 यूनिट, then this is the concept of quantity supplied. It is comparatively a narrow concept. Clear beta? Move to the next topic. What is individual supply and market supply? Individual supply, as you have already studied in the concept of individual demand. Individual supply refers to different quantities offered for sale by an individual firm. Keep in your mind, this is by an individual firm. Clear? On the other hand, market supply by all the individual firms, that is by all the firms corresponding to different prices. दोबारा से देखिए, अभी हम डिस्कस करें. इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज offered for sale by an individual firm at different prices. On the other hand, market supply refers to the sum total of various quantities offered for sale by all the individual firms corresponding to different prices. Clear? Now, what's about the supply schedule? Supply schedule refers to a tabular presentation showing different quantities of a commodity corresponding to डिफरेंट पॉसिबल प्राइस लेवल. अभी अभी मैंने आपको एक टेबल बताई थी, इसी तरह से ये आपकी टेबल है कि प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पर हमने एक रखा कि व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹5, क्वांटिटी सप्लाइड इज 0. इट मीन्स द प्रोड्यूसर इज नॉट विलिंग टू सेल एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी at ₹5 price level. This is known as minimum supply price. Minimum supply price refers to the price of the commodity at which or below which the seller or the producer or the firm is not willing to sell any unit of the commodity. So this is individual supply schedule. Move to the next. This is the market supply schedule by the firms A and firm B. Now look at the table. Look at the table. These are the price levels
this is the supply by firm A and this is the supply by firm B. Market supply refers to the sum total of supply by firm A and supply by firm B. This is a sum total. As we have already studied that market supply curve refers to the sum total of supply by all the firms in the market for a particular commodity corresponding to different possible price levels. So this is all about the market supply schedule. Move to the supply curve. This is individual supply curve. We will plot these points and the same way on x-axis there will be quantity supplied and on y-axis there will be price. पहले हमने क्या लिया था, x-axis पर हम ले रहे थे quantity demanded और y-axis पर हम ले रहे थे price. अब यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है, when price of the commodity is rupees 10, its demand is 5 units. It increases, its quantity supplied also increases. Means when price of the commodity increases, quantity supplied also increases. That's why there is always positive or direct relationship between price of the commodity and its quantity supplied. Now, this is the market supply curve. Market supply curve can be drawn by drawing firm A's demand, firm B's demand, then their horizontal summation. क्लियर बेटा, their horizontal summation. अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी मार्केट सप्लाई कर्व आएगी वो कंपैरेटिवली फ्लैटर आएगी बिकॉज दिस इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स. इसलिए जो मार्केट सप्लाई कर्व होगी दैट विल बी कंपैरेटिवली मोर फ्लैटर showing greater degree of elasticity. We will discuss this concept in the later part of the video. Now, what's about the supply function? Supply function refers to the functional relationship between quantity supplied of a commodity and factors affecting it. Means it refers to the functional relationship between supply of the commodity and its determinants. Now we will discuss about the determinants. Supply of a commodity by a firm depends on few factors like price of the commodity itself, then prices of other commodities, that is price of the related goods, then state of technology, then cost of factors of production, then objective of the firms, etc. Let's discuss these determinants one by one. First is the price of the commodity. Other things remaining constant, higher the price level, higher will be the supply of the commodity, or the producer or the seller will ready to offer more for the sale. This is also known as law of supply because other determinants are taken as constant. Dear student, as I have already told you that higher price of the commodity will ensure greater profit for the seller. That's why the seller will be ready to offer more of the commodity at its higher price level. Now, price of related goods. Related goods are of two types. One is a complementary good and second is the substitute goods. Substitute goods are those goods that can be used in place of each other. On the other hand, complementary goods are those goods that are demanded jointly, means जिनकी दोनों की साइमल्टेनियसली ज़रूरत पड़ती है. अब हम यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं. हम सब्सटीट्यूट गुड्स में एग्जाम्पल ले लेते हैं. Tea and coffee. This is tea and coffee. Now, if price of tea increases, the producer or the firm will offer more of tea for sale. That's why the quantity supplied of tea will increase. On the other hand, quantity supplied of coffee will decrease. So हमने यहाँ से क्या निकाला? As price of the substitute good increases, supply of the other commodity will decrease and vice versa. अभी हमने डिस्कस किया कि अगर if price of tea increases, then quantity supplied of coffee will decrease and vice versa. The opposite will happen in case of complementary goods. Now, what's about the complementary goods? The complementary goods are of two types. One, this is
let it be bread and butter. Clear beta? Bread and butter. Now, if price of bread increases, supply of bread will also increase, supply of butter will also increase, क्योंकि ब्रेड और बटर दोनों की साइमल्टेनियसली ज़रूरत है. सो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, supply of its complementary good also increases and vice versa. This is very very important concept, particularly for high order thinking question, hot questions या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इनको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. आपके इस एग्जाम्पल में एक्स और वाई लिया हुआ, जेड लिया हुआ, मैंने आपको यहाँ पर टी, कॉफ़ी और ब्रेड बटर का एग्जाम्पल देकर क्लियर किया. गॉट इट बेटा? Move to the next. This is about the state of technology. A change in technology of production which decreases the cost of production, increases supply of the commodity. जब हम improved या एडवांस टेक्नोलॉजी को, मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी. गॉट इट बेटा? और अगर हम आउटडेटेड टेक्निक को यूज़ करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने से सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल डिक्रीज. नाउ कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ इनपुट्स या प्राइस ऑफ इनपुट्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इनपुट्स भी कहते हैं. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बेस को हम कह सकते हैं. अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है या इनपुट्स महंगे हो जाते हैं या रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है तो क्या हो जाएगा? देयर विल इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द रिजल्ट विल बी decrease in supply of the commodity and vice versa. Move to the next. Objective of the firm. Dear students, there are two types of objectives. One is the sale maximization, second is the profit maximization. If the goal of the firm is profit maximization, more of the commodity will be offered for sale only at higher price level. On the other hand, if the producer or the firm has a goal of sale maximization, more of the commodity will be offered even at the same price level. So, if the goal of the firm is profit maximization, there will be less supply of the commodity. If the goal of the firm is sale maximization, there will be more supply of the commodity and vice versa. Got it, beta? Move to the next topic. This is the law of supply. According to law of supply, there is always a positive relationship between price of the commodity and quantity supplied. Higher the price level means higher quantity supplied and vice versa. Clear बेटा? जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप किया था, यहाँ पर हम पॉजिटिव रिलेशनशिप करेंगे. क्लियर? ये छोटी सी टेबल आपको नज़र आ रही है, हाइपोथेटिकल टेबल है. आप कोई भी टेबल बना सकते हो कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई जो है वो प्राइस इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है. गॉट इट बेटा? मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज अबाउट द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन. थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था. डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में हम क्या शो करेंगे? पॉजिटिव रिलेशनशिप. इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो increases and vice versa. Got it? Now, what's about the assumptions? Assumption means the conditions on which a particular law applies. The very first, because we have assumed other things remaining constant. So, जो अभी हमने determinants किए थे, उन्हीं सब determinants में सिर्फ हम own price को constant नहीं करेंगे, बाकी सब constant हो जाएंगे. Like price of other related goods should not change, technology of production should not change, cost of production should remain same, goal of the firm should not change, taxation policy of the government should not change. बच्चे टैक्सेस क्या होते हैं? अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है. और अभी हमने डिस्कस किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से सप्लाई कम हो जाती है. और अगर अपनी गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को कम कर देती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, सप्लाई बढ़ जाता है. मतलब अगर गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है तो उससे भी सप्लाई पर अफेक्ट आएगा.
इसलिए जब हम अजम्पशंस देंगे तो हम ये मान लेंगे कि टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिमेन्स कांस्टेंट. गॉट इट? नाउ व्हाट्स अबाउट द एक्सेप्शंस टू द लॉ? कहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होता? द वेरी फर्स्ट, लॉ डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट whose supply is governed by the natural resources. अगर हम बात करें कि आज के टाइम में हम वीट का प्रोडक्शन बढ़ा लें, मीन्स दिसंबर में हमें वीट मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. इवन एट द हाई प्राइस लेवल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर. क्यों? क्योंकि इस मौसम में हम वीट को प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते. सो इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड does not apply. Now supply of goods, law of supply does not apply. Now supply of goods having social distinctions will remain limited even if their price stands to rise. Social distinction demonstrated products होते हैं, prestigious goods होती हैं. ये ऐसी goods हैं जिनकी सप्लाई को रखा ही लिमिटेड जाता है ताकि उसमें डिस्टिंक्शन या विशेषता बनी रहे. सपोज करिए कि अगर कोई चीज़ बहुत महंगी है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल कर दिया है, लोग जैसे तैसे करके उसको खरीद लेते हैं, तो फिर उसमें वो विशेष गुण नहीं रहेगा. मीन्स कोई भी उसको खरीद सकता है. ऐसे सिचुएशन में उसको लोग नहीं खरीदेंगे. सो अगर लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में हम बात करते हैं, इवन एट द हाई प्राइस लेवल सप्लाई इज कैप्ट टू बी लिमिटेड फॉर द प्रेस्टिजियस गुड्स. सो यहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता. Then sellers may be willing to sell more units of a perishable commodity at a lower price. Perishable goods ऐसी goods होती हैं जो easily destroyable होती हैं, like milk, vegetables, eggs, etc. तो इनका प्राइस बढ़ने पर, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इनके प्राइस बढ़ने की वेट नहीं की जाती. इवन एट द लो प्राइस लेवल द सेलर वॉन्ट्स टू ऑफर मोर फॉर द सेल. सो इन तीनों ही सिचुएशन में लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता. दीज आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई. हमने पढ़ा देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन price of a commodity and supply of the commodity. That's why supply curve is positively sloped. But in case of agricultural goods, it is not positively sloped. ये कैसी है? Even at the high price level, supply remains constant. प्राइस के बढ़ने या घटने से सप्लाई नहीं बढ़ती. ये है एग्रीकल्चर गुड्स. इसी तरह से सोशल डिस्टिंक्शन में even at the high price level supply remains limited. In case of perishable goods also, प्राइस चाहे कितना भी हो क्वांटिटी उतनी ही रहेगी. जैसे हम एग के बारे में बात करें, एग का स्टॉक लिमिटेड रखा जाता है. सो प्राइस चाहे जितना भी बढ़े उसको उसके अवेलेबल स्टॉक से बढ़ाया नहीं जा सकता. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ योर होमवर्क टू रिवाइज the topics up to law of supply. Clear? So, dear students, be sincere, do your work properly. We will meet in the next video. Goodbye, dear students. Have a wonderful day.